अच्छा जी, मैं जैम्बो की फाइल खोलूँ। यहाँ पे ईशल ईशल अच्छा। इसमें हमने क्या क्या कर लिया था। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन लिख ली है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी मूविंग सर्कुलर पाथ कांस्टेंट स्पीड, एसी आ गया, ये आ गया, लार्जर फोर्स आ गया। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा। बुक बुक में ये बंद कर दें, ये बंद कर दें, this one as well, and I need IGCSE Physics, and I need this one. Okay. अच्छा, फिजिक्स में हम आ जाएं, एडिंग फोर्सेस सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ओके, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर लिया था। डिस्प्ले एनेबल स्टूडेंट प्लीज। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चंस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने आई बिलीव मोमेंट्स का टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, हम सबसे पहले करते हैं कि मोमेंट की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद वी क्विकली मूव टू द क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा। हम्म I'm on slide one of Jumbo. Jumbo, slide one. You sure? Okay. अच्छा जी, how would I define moment? Moment की definition क्या होगी? Force times the distance from the pivot. ठीक है जी, force time perpendicular distance from pivot. Definition formula instead हमसे formula लिख लेते हैं, force times perpendicular distance from pivot, perpendicular distance. अच्छा, this is the formula. If I were to ask, yeah, if you were to tell के इसका what does it calculate? What does moment calculate? ठीक है, ये तो फॉर्मूला आ गया, लेकिन इससे हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं? हमें ये कैलकुलेट क्या चीज़ करके देते हैं? It basically calculates the turning effect in a body. Turning effect produced in a body. ठीक है जी, मोमेंट कैलकुलेट्स द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। अच्छा जी, देयर इज अ सीसॉ, there is a seesaw with a pivot. अच्छा जी, there are two people sitting. One person is, in fact, there are three people sitting on it. There is person A weighing, person A weighing 320 newtons. The person A is at 3 meters from pivot. Then there is person B weighing, person B weighs how much? Person B weighs 540 newton, and this person at 1 meter from pivot on same side as person A. ठीक है जी। So the third person, person C, sits on the other side. How far away? Let's say person C sits 3 meters away from pivot.
You have to find weight of person C. Is the question clear? Yeah. And by the way, seesaw is in equilibrium. Okay. If it were not, I don't think you would have been able to find the weight of person. Anyway, it's in equilibrium. Acha, here we are taking an assumption that the weight of seesaw is either negligible और we assume that the weight of seesaw is acting about pivot. तो क्योंकि उसका distance from pivot कुछ भी नहीं है, zero है, तो इस वजह से we ignore the weight of seesaw. If it were a non-uniform body, then we would have to incorporate the weight of seesaw or the body being balanced itself. जिस body पे बाकी bodies balance हो रही हैं, उस body का weight भी we'll have to incorporate. If it's a non-uniform body या उसका weight is not acting on the pivot. Did you get what I just said? Yeah. ठीक. This person say we're like 500 newtons. Yes, that other person weighs 500 Newton. Hopefully आपने इस तरह किया है कि slide 2 पे clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Yeah. अच्छा जी, if A and B are on this side of seesaw, तो C is on this side. इसका डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, इसका डिस्टेंस 3 मीटर्स है. The first person weighed 320 newtons, the second person weighed 540 newtons, and W and this distance is 3 meters. So we'll get 320 times 3 plus 540 times 1 is equal to 3W. So working it all out, W would come out as how much? 500 Newton. 500. ठीक है जी, perfect. अच्छा 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 अच्छा. आ, मोमेंट्स जो हैं ये टर्निंग इफेक्ट हम जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इससे हमें लिवर्स और फल्क्रम्स में भी हेल्प मिलती है. फॉर एग्जांपल, if there were this heavy load, there were this big heavy stone, let's say, ठीक है, and I want to lift it using a lever. ठीक है जी, तो यहाँ पे I will have to create a pivot. ठीक है जी, फिर क्या होगा इसमें फर्दर इसमें ये होगा कि if this distance, इसका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, तो I'll have to exert force this way. इसका जो वेट यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, that is कितना है कितना है कितना है कितना है 1000 न्यूटन्स. ठीक है जी. अच्छा, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज 10 cm, एंड distance from this point O to this point B, it is how much? This distance is 200 cm. So how much force do I have to apply at point B to lift this stone up?
1000 multiplied by 10 is equals to 200 times the force. And the answer would be 50 newtons. 50 newtons. Perfect. Acha. Then there is one more theoretical thing. Acha ji, what is it? This is what are the conditions for equilibrium? When can we say that a body is in equilibrium moment wise? Conditions for equilibrium. There are two conditions. Uh, When the clockwise moments and the anti-clockwise moments are equal. hmm, hmm. There is no as such need to write it down. Let's just move on to the next question. Is there any question? Is there any question? Okay, okay. Not really. Not really. ठीक है. अच्छा इसी तरह मोमेंट्स का जो टॉपिक है वी ऑल्सो an extension of this topic is the application of center of mass. Center of mass आपने पहले पढ़ा हुआ है. Yes. Center of mass is any point in a particular body in which about which the whole weight of the body seems to be acting upon. ठीक है तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकली रेगुलरली शेप्ड बॉडीज हैं फॉर एग्जांपल स्क्वायर है फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है दैट इज देयर सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल सम इरेगुलर शेप्ड बॉडी इसका सेंटर ऑफ मास हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं डू वी नो Using the, I can't remember the name of the apparatus, but you like use a string to find them. ठीक है we for example take one point और यहाँ से we let this body hang ठीक है for example it hangs like this so we'll draw a line like this from this point then we'll take another point and let the body hang from that point then another point and then another point all these lines they would be converging about a particular point so they would be intersecting at a particular point that point will be the center of mass of this body अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है the way ठीक है ठीक है लेट्स क्विकली अच्छा इसके मोमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस ही एक साथ देखेंगे जब आफ्टर टुडे या कल कल हम थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं देख लेंगे मोमेंट और मोमेंटम के मिला के आज बस ये टॉपिक जो है इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं व्हाट इज मोमेंटम Mass times the velocity. ठीक है जी मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी momentum is the quantity of motion in a body and as you said it's calculated using formula mass times velocity. Acha, then we have got law of conservation of momentum. What is law of conservation of momentum? ठीक है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमारे पास कि इन ए क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है Where nothing is lost or हाँ जी no energy is gained or lost or there is no external force entering or no force leaving no energy leaving the system ठीक है जी in a closed system when two or more objects collide
then the sum of their momentums. What will be the plural for momentum? Momentums or momenta or something? Momentum. The sum of their individual momentums before collision will be equal to sum of their momentum after collision. ठीक है जी? So for example, if we have got two bodies with masses m1 and m2, okay, they are moving with initial velocities u1 and u2, and after they collide, they move away with velocities v1 and let's say they're moving in the same direction. Okay, अभी वरना direction भी incorporate करनी पड़ जाएगी. Let's say they are both moving in this direction with velocities v1 and v2, and after they collide, their velocities become v1 and v2. So let's write this down as well. Let us consider two bodies with respective masses, yeah, with masses m1 and m2 moving with a velocity. They are moving with velocities u1 and u2 collide with each other. ठीक है जी. After collision, their velocities become how much? v1 and v2. Velocities become v1 and v2. ठीक है जी. Then according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Therefore, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक है जी. ये
लिख लिया आपने या लिख रही हैं? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरह भी हो सकता है कि द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट मूविंग ऑफ as separate bodies like before collision. For example, स्नूकर की टेबल जो है उसकी अक्सर स्नूकर बॉल्स की एग्जांपल दी जाती है, समझना आसान है। आपने अगर किसी को स्नूकर खेलते हुए देखा हो या खुद पे भी खेला हो, आप एक बॉल से क्यू बॉल से दूसरी बॉल को हिट कर रही हैं, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि दोनों बॉल्स अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती हैं, समटाइम्स इट हैपेंस कि दोनों बॉल टकरा के एक साथ मूव करना शुरू कर जाती हैं। समटाइम्स इवन दिस हैपेंस कि एक बॉल जो क्यू बॉल है वो बिल्कुल रुक जाती है और दूसरी बॉल जो है वो आगे मूव करना शुरू हो जाती है। तो देर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अच्छा, पहले आखिरी वाला जो केस है, लेट्स से कि क्यू बॉल जो है वो m1 है, ठीक है। तो m1 u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे जाके दूसरी बॉल को हिट कर रही है, तो इसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह u2 जिस बॉल को ये हिट कर रही थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और उसकी v2 जो है वो फिर इट विल गेन सम वेलोसिटी बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। अच्छा, इट कुड भी कि अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें और साथ मूव करना शुरू कर दें आफ्टर कोलिजन, तो m1 u1 और m2u2 वो तो अलग अलग रहेंगे, बट m1v1 और m2v2 में क्या होगा, सिंस नाउ दे हैव बिकम अ जॉइंट मास एंड दे आर नाउ मूविंग विद ए जॉइंट वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी, तो it will simply become mv. If they start moving with the together with the same velocity, so instead of m1 v1 and m2 v2 we will have mv. अच्छा, let's look at a question. एक क्वेश्चन देखते हैं इसका and hopefully that would make things more clear. अच्छा, we have got a truck of mass 600 kg, truck of mass 600 kg. अच्छा जी, moving with a velocity 3 meters per second. अच्छा जी, collides with a stationary truck. Let's say stationary. It can't be. Okay, stationary van of mass 300 kgs. अच्छा जी, the two after collision, the two vehicles start moving together with same velocity. Find their velocity after collision. ठीक है जी, give this question a go. Let's see if you're able to calculate.
Is the answer 2 meters per second? 2 meters per second. Yes, ठीक है जी. हमने ये किस तरह से किया है? We have got m1 is equal to 600. We have got m2 is equal to 300 kg. u1 is equal to how much? u1 is 3 meters per second. Yeah. And u2 is equal to 0. So we'll get 600 times 3 plus 300 times 0 is equal to 600 plus 300 multiplied by v. ठीक है जी. तो we'll get 1800 by 900 is equal to v, and then we'll have v is equal to 2 meters per second. Perfect. ठीक है. अच्छा, ये वाला जो हमारा केस था, you must have noticed that before collision and after collision, all the bodies they were moving together just in one direction. अच्छा, it could be the case that the bodies they collide even before collision. So for example, दो बॉडी जैसे आमने सामने से आते हुए एक दूसरे से टकराएं. ठीक है. अच्छा, इसी तरह बॉल्स जो हैं दो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे कोलाइड एंड देन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. तो इस प्रॉब्लम में और हमारे वाले प्रॉब्लम जो हमने अभी करंटली सॉल्व किया, सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि वील हैव टू अज्यूम वन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू बी पॉजिटिव. ठीक है. अगर एक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स राइट हैंड साइड में पॉजिटिव ले रहा हूँ, देन ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव होगी. तो दैट वुड बी द ओनली चेंज. अच्छा, इस तरह का अगर हम एक क्वेश्चन देखें, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है. लेट्स से वी हैव गॉट ठीक है. देयर इज ए राइफल एंड ए बुलेट. ठीक है जी. So for example, if I've got a rifle of mass 10 kg, okay, I've got a bullet of mass, let's say 0.01 kg. Hundred gram will be 0.1, right? नहीं, 10 grams कर लेते हैं इसको. इतनी हल्की बुलेट होती नहीं है. बुलेट का कितना 100 ग्राम तो होगा ही मास. लेट्स से 100 ग्राम्स ही मास है. ठीक है. अच्छा, then the bullet is shot velocity velocity कितनी होगी? 300 meters per second. अच्छा जी, आपने velocity of rifles recoil या rebound कैलकुलेट करनी है.
Is the answer 3 meters per second? Let's see. We have got, let's say rifle is M1 is 10 kg. We'll have U1. Hmm. U1 is equal to 0. Okay. We have got M2 is equal to 100 and U2 is also 0. Here. Then we have to calculate V1 when V2 is how much? V2 is 300. Okay. Let's put these values in the equation. What we get is hmm, okay, M1 U1 is 0, M2 U2 is 0 is equal to 10 kg times V1 is equal to sorry plus ठीक है if the direction of bullet is positive the direction of rifle's recoil will be negative ऐसा ही है ना मैं आगे की तरफ फायर करूंगा बुलेट तो इट विल रिकॉइल बैकवर्ड्स तो यहाँ पे मैं -v1 कर देता हूँ उसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ दिस विल बिकम m2 कितना है 100 ग्राम्स तो 100 ग्राम्स मेरे पास हो जाएगा 0.1 kg Yes. 0.1 and it will multiply with 300 so it becomes 10v1 is equal to 30 Yes. and v1 is equal to 30 by 10 so which is equal to 3 meters per second perfect परफेक्ट अच्छा जी ये हमारे पास हो गया ये हमारे पास हो गया ये हमारे पास हो गया अच्छा एक चीज अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि हमने फोर्स पढ़ा था अच्छा या हमने अभी पढ़ा है मोमेंटम के बारे में अच्छा जी मोमेंटम को हमने क्या पढ़ा है जी कि मोमेंटम इज Quantity of motion. momentum is quantity of motion and it's calculated as mass times velocity ठीक है जी अच्छा तो if a body starts from rest या रुकें इससे पहले मैं लिख लेता हूँ P is equal to mv अच्छा then I say if a body starts from rest then delta v is equal to v minus u and since u is equal to 0 delta v is equal to v ऐसा ही है तो मोमेंटम को मैं रीस्टेट कर सकता हूँ m delta v अच्छा if I divide both sides with change of time ठीक है जी I'll get p by delta t या इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेता हूँ so taking change of both sides with respect to time it becomes p by delta t is equal to m delta v by delta t ठीक है जी what is this particular quantity equal to delta v by delta t किसके बराबर होती है
This is acceleration. Yeah. Delta V by delta T is equal to A. So I've got P by delta T is equal to MA. And I know MA is equal to force. So I say P by delta T is equal to force. So force can also be defined as rate of change of momentum. ठीक है जी? So from today onwards, we know that force is mass times acceleration, but force is also rate of change of momentum. And if you think about it for a second, change of momentum क्या होता है? Change of momentum is defined as, I mean, if I put it in formula, it will be mv minus mu or m times v minus u. ओके अच्छा इस v माइनस u की अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकालूं कि हाउ रैपिडली दिस थिंग इज हैपनिंग सो दिस इज एक्सेलरेशन ठीक है तो फोर्स जो है इफ आई एम अप्लाइंग अदरवाइज आई आल्सो नो अबाउट फोर्स के फोर्स चेंजेस वेलोसिटी ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ठीक है तो फोर्स कैन आल्सो बी considered to be the agent which is changing the momentum of a body. Okay. Because mass of the body stays the same, assuming mass of the body stays the same, then if we apply force, it would produce acceleration or it would change momentum of the body. अच्छा जी ये वाली बात हो गई लेट्स नाउ डिस्कस वन मोर थिंग जो कि है इम्पल्स आपने पहले पढ़ा था क्या होता है The change in momentum. Momentum नहीं impulse is in fact for how long a force is applied to a body ठीक है जी तो force multiply by time अच्छा इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा दोबारा रीअरेंज कर लें we said that F is equal to F is equal to ma then I say F is equal to m v minus u by t. Excuse me. Then I say force multiplied by time is equal to mv minus mu. So change of momentum is called impulse. ठीक है अच्छा here you have to be mindful of a thing कि these are two different things one is the rate of change of momentum and the other is simply change of momentum so rate of change of momentum rate of change of momentum is force and simply change of momentum is impulse or force times time ठीक है जी अच्छा अच्छा now let's look at a few questions ठीक है जी we have got two balls x and y ball x has got a mass
1 kg, 1 kg traveling at 2 meters per second. Okay, 2 meters per second. ठीक है. Head on collides with an identical ball Y at rest. ठीक है जी, बॉल Y रेस्ट पे थी, बॉल 1 जो है इसने से कोलाइड किया. अच्छा जी, आफ्टर कोलिजन ball X stops. Calculate velocity of ball Y. Okay. 1 meter per second? Hmm, नहीं नहीं, क्यों? अच्छा, एक चीज देखें, देयर इज दिस बॉल, ठीक है, it collides with an identical ball which was at rest. This one has got 0 meters per second. So before collision, the two balls have identical mass m. Okay. Before collision, all the momentum was because of velocity of this ball, u. Okay. Okay. And after collision, if the first ball stops, the momentum before collision and after collision has to be same, right? Yeah. So the second ball would start moving with the same velocity as that of first ball before collision. So V2 will be equal to U1. So logically it has to be 2 meters per second. अब अपनी कैलकुलेशन में देखें आपने कहाँ गलती की है. ये समझ आया सिनेरियो जो मैंने सारा यहाँ पे बताया कि there are two identical balls and before collision just one is moving, the other is stationary. So the entire momentum in the system is provided by the first ball which is moving. And after collision, if the first ball stops and the second one starts moving, their masses are the same. So now the entire momentum is because of that second ball. If masses are same, let's say, चलो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, slide 2 पे थोड़े से ही लिख भी लेता हूँ. Let's say कि we have got M1 which has got a U1 and M2 which is equal to M1, तो इसको हम M ही कर देते हैं दोनों को. ठीक है, तो U2 is 0 and V1 is equal to 0. Now let's see, MU1 plus 0 is equal to MV1 will become 0 plus MV2.
ये चीज, ये लाइन समझ आई है जो मैंने लिखी है? Yeah. ठीक है, so we have got mu1 is equal to mv2, m's cancel out, u1 is equal to v2. The velocity will transfer from one ball or one body to the next if their masses are identical and the one of them was at rest and the first one hits it head on, and it would transfer all its velocity to the next one. The second one would start moving and the first one would stop. In that case, that second ball would acquire the velocity of the first ball. Okay. ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में देखते हैं जो आपने वैल्यूज लिखनी थी उनमें लेट्स सी के कहाँ पे गलती हुई है। अच्छा, m1 is how much, 1 kg? Yes. m2 is how much? It's also 1 kg since the balls are identical. u1 is how much? 2 meters per second. Yes. And u2 is 0. v1 is how much? 0 meters per second. And v2 is what we have to calculate. So first let's write the expression m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक है जी। अच्छा, m1 u1 will become 1 multiplied by 2 plus m2 is 1 multiplied by 0, m1 v1, m1 is 1 multiplied by 0 and m2 is 1 multiplied by v2. So we get 2 plus 0 is equal to 0 plus v2. So v2 is equal to 2 meters per second. आपने कहाँ गलती की थी? आपने कोई स्टेप्स तो जंप नहीं किए थे? I think मैंने दूसरी कॉल का मैथ्स करा। अच्छा, ठीक। आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर रही हैं या जस्ट सॉल्व कर रही हैं? क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे। क्वेश्चन और सॉल्यूशंस दोनों लिखे हैं, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आपने जो मिस्टेक फिक्स करनी है वो कर लें, देन आई विल गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, समझा। ठीक है मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि boy with mass 50 kg jumps on a trolley of mass 20 kg moving in the same direction what is their combined velocity? What is their combined velocity afterwards? Okay. एक सेकंड, मैंने बॉय की इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं दी ना, और मैंने आपको इवन इसकी भी नहीं दी, ट्रॉली की। रुकें, Yeah.
Jumps. The boy is running at the boy is running at 5 meters per second, and the trolley was moving forward at 1.5 meters per second. Wow, 5 meters per second. ये ऐसे कैसे ये दे लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस? 3.6 kilometers per hour. So the boy is running at 5 meters per second. He is basically moving forward at 18 kilometers per hour. Is that a normal enough pace? Not too fast. ठीक है. ट्रॉली की चलन थोड़ी मुनासिब है 5.4 किलोमीटर से. क्या कर सकते हैं? Meters per second. 1 मीटर पर सेकंड से रेंज क्विकली देखते हैं. बॉय को हम कहते हैं M1 है 50. U1 है कितना 1.5. अच्छा, V कैलकुलेट करना है. M2 is 20. अलहमदुलिल्लाह. अच्छा जी, U2 is 1.5. Actually, one is 5 meters per second. Oh, my bad. U1 is 5 meters per second. U2 is 2.5. अच्छा अच्छा. तो हमारे पास क्या बनेगा? 50 multiplied by 5 Yeah. plus 20 into 1.5 is equal to 50 plus 20 into V. अच्छा जी, 50 into 5 कितना होता है? 50 into 5 होगा 250. 20 into 1.5 होगा 30 is equal to 70 V, and 280 divided by 70 is equal to 3. ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट. 4 meters per second. आपका यही आंसर आया था? डेफिनेट आया था. Yeah. यही आंसर आया था. अच्छा, शेल वी डू वन मोर क्वेश्चन या आज यहीं तक रखें? कुछ भी सही है. कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. अच्छा जी, हम थोड़े से चेंजेस क्या करेंगे? फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम चेंज कर देते हैं बॉय को गर्ल से,
Okay. There is a girl. अच्छा जी, खातून का मास जो है वो भी 50 kg है. But this time she jumps off a boat, off a boat instead of jumping on a trolley. लड़कियां जैसे काम नहीं करेंगी ना. Jumping off a boat. अच्छा जी. Boat has got a mass 300 kg. Mass of boat is 300 kg. अच्छा. हाँ, ये मजे का सवाल है ना. ये डिफरेंस सही है. अच्छा जी, अच्छा जी. Of a rainbow with a velocity 3 meters per second. ठीक है जी. मैं दोबारा बोल रहा हूँ. हाँ जी. सॉरी. Never mind. Sorry.
the answer 0.5 meters per second? हाँ जी, द आंसर इज इंडीड 0.5 मीटर्स पर सेकंड। गुड जॉब। ठीक है, हम इंशाल्लाह यहीं से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी का टॉपिक आपने पहले किया है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं किया। चलें ठीक है, इंशाल्लाह ये मोमेंटम कल कंप्लीट करके एनर्जी का टॉपिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। कल तो हम इसमें शाम के टाइम पे मिल रहे होंगे ना? जी। जी। और इंशाल्लाह 16 से आपने बताया डे आफ्टर टुमारो वी मूव इट टू 12 PM पाकिस्तान टाइम, 12 नून। Yeah. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।